near 0 meter per second velocity to ensure that the Vikram lander has a soft landing on the surface of the moon at the very desired landing site location. So we are right now in the rough braking phase of operation, nearing 3 minutes 39 or 40 seconds, and almost I would say 480 meter per second velocity has been reduced, which is clear indication that the entire operations during which the 4 throttle engines are being fired has been performing absolutely nominally, and the reduction in the velocity and the down range, the range it has to, after the descent operation has started, it has to cross almost a range of 600 kilometers before it lands at a predefined destination. So I am seeing a very close match with the pre-flight and the flight prediction. The velocity of the Vikram lander has come very close to 1100 meter per second. So almost to 500 meter per second velocity reduction has happened in just 4 minutes. So another 6 minutes to go before we reach the mission objectives of the rough braking phase. जी हाँ, करीब करीब 6 मिनट का समय 4 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। 6 मिनट लगभग और वेगमान कम करने के लिए लगेंगे। इस समय करीब करीब जो सारी गतिविधियां हैं, सारी प्रणालियां हैं, वो अभीष्ट रूप से चल रही हैं। इस अवतरण को सुरक्षित और कोमल या सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग बनाने के लिए अनेक अभिकल्पनाओं पर विस्तृत चर्चा और गहन अध्ययन के पश्चात ही विशेषज्ञों ने अनुमति प्रदान की थी। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। इसके लिए प्रोपल्सन, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सेंसर्स, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, थर्मल जैसी अनेक प्रणालियों के उचित सामंजस्य से ये सब कुछ संभव हो सकेगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी गतिविधियां स्वचालित रूप से चल रही हैं। इस दौरान लैंडर में लगे अनेक संसूचक जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर उचित गणना के आधार पर यथोचित निर्णय लेकर लैंडर को चंद्रमा की तरफ उतरने में सहायक सिद्ध हो रहा है। करीब करीब 939 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम प्राप्त कर चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो करीब करीब 700 मीटर प्रति सेकंड का वेग हम घटा चुके हैं। इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है, प्रोपल्सन सिस्टम है, ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट व्यतीत कर चुके हैं और आने वाले 4 और मिनट में हम लगभग जो इसका क्षैतिज मान है वो हम काफ़ी कम कर पाएंगे। करीब करीब 0 के बराबर, लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes the velocity should come down to something like 146. So on your screen you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis is the altitude. So I think altitude has Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions, and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds, so maybe another 2.5 minutes to go, and we have almost touched the 630 meter per second, so maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, quite a velocity, and I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction, and since we are trying to bring an object from an orbiting around the
around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. We maybe it's around 450 meter per second, and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है, और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक प्रचलित हैं। हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है वो शुरू कर दिया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय जो लैंडर है वो थोड़ा सा अपने अक्ष से झुका हुआ होगा, और लगातार इस समय हम सारे वैज्ञानिक आप अगर देख पा रहे होंगे 73.3 वर्टिकल वेलोसिटी, और डाउन रेंज जो है करीब 18 किलोमीटर हम दूर पर है लैंडिंग साइट से, और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउनलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं। इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, और आप सुन पा रहे होते तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 210 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है, और रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे Finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds, and the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5 kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site.